Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. I hope I am clearly audible to all of you. Let's start the uh, analysis for slot 1. I actually appeared for slot 1, right? So I attempted it like a student, so I can relate uh, with special things that happened with all of you, especially in the DLR section. तो अच्छे से बात करेंगे यार, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑनेस्ट एक ओपिनियन दूंगा मैं, है ना, कि एक्चुअली में कैसा सेक्शन था, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल माइट से कि यार बाहर से तो सब कुछ वैसे इजी लगता है, सो अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स मेंटर्स हु हैव नॉट अटेम्प्टेड द पेपर माइट से डुएबल था डीएलआर, बट नोवेयर आई हैव फेल्ट दैट कि वो पेपर जो हमारे पास आया था वो कहीं से भी डुएबल था, राइट? सो इट वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड ओनली, right? Let's wait for just 2 more minutes. Let more people join in. We will start our analysis then, right? Cool. So let me share link as well with other students. Right. So we will first start with the VARC part, right? Uh, okay, let me check if I am live. Yeah, I think I am live. Audio video should be visible. Okay, let me share link with people. Oh, so I just opened my desktop and there are a lot of messages which are loading. ठीक है, start करते हैं. And then I will also provide my 2 cents on the overall difficulty level and what could be the cutoffs. Right? It's too early to guess the cutoffs, but still I think we can discuss something around that. So let's start with the VARC part. देखो VARC में if I give you true picture, right? I think the passages were there were 4 passages, no change in pattern. Passages were easy to read, right? So I did not face any difficulty in any of the passages, right? We will see one by one कि passages में क्या था. There were 16 questions, right? And VA also, I think VA also was on doable side. At least from understanding point of view, it was on the doable side. अब उसके बाद एक्यूरेसी कितनी रहती है या कितनी नहीं है या उन्होंने आंसर्स क्या दिए हैं, राइट, दैट इज ए सेकेंडरी मैटर. उसको हम अभी जज नहीं कर सकते, है ना, उसके बारे में आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग. बट दूर से देख के ऐसे लगा कि चीजें समझ आ रही है, राइट? तो वहां पे कुछ इशू नहीं आया मुझे, राइट? एंड आई सिलेक्टेड द पैसेज इन दैट ऑर्डर, जो भी ऑर्डर में थे. तो मैंने चारों पैसेजेस अटेम्प्ट किए एंड आई attempted all VA questions. There will be inaccuracies, but what I believe is that काफी कुछ यहाँ से किया जा सकता था, राइट? तो इफ यू आर एवरेज इन द VARC, आई थिंक स्टिल यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, राइट? सो VARC was something which was on the doable side. Right now, let's discuss. Okay, let me check if I am properly audible and visible. Right. Yeah, so people are there, right? So, so let's first discuss the passages that we got, right? So first RC was based on the complex system, if you remember, right? वो कुछ I think music से related था, right? Some music and I would say electronic music. So there were two parts, music and electronic music. So the passage was trying to differentiate between the all type of music that basically come from rhymes or the traditional methods, and then electronic music जहाँ पे आपको कुछ भी ऐड करना है so that you can add with the PCs devices. And फिर उधर कहीं ना कहीं ये भी बता रहा था कि even if the devices have changed, people will take time to understand, to comprehend what the composer wants to say. But main point was कि कौन सा better है, are we losing that touch from the traditional and all that stuff. But जो questions थे, I think questions were manageable. But हाँ, accuracy I'm not very sure, because कभी कभी बहुत ज़्यादा simple questions आते हैं तो accuracy impact हो जाती है, right? So I'm not sure about that. Then there was a good passage on the economics, if you remember.
जहाँ पे वो बोल रहा था कि इनइक्वालिटी अगर होती है ज्यादा, एंड दिस वाज एन इंटरेस्टिंग रीड, इनइक्वालिटी अगर होगी तो what would be the relation between inequality and I think growth of the country. एंड फर्स्ट पैसेज वाज टॉकिंग अबाउट कि इनइक्वालिटी आपको कैसे हेल्प करती है, राइट? यू नीड a large amount of investment, and that's why if inequality is there you can easily invest that amount. But if inequality is not there, then उसके अलग अपने constraints होते हैं. And the next passage was discussing the negative side of inequality, कि अगर inequality ज़्यादा बढ़ जाए then power will either, or democracy will either lie on the side of who are in the majority. If the rich is in majority, then democracy will listen to that. If poor people are in majority, तो कुछ कुछ ऐसा वहां पे, आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट एग्जैक्टली वाज सेड, बट ऑन द सिमिलर लाइंस. एंड दिस वाज एन इंटरेस्टिंग रीड, राइट? आई कम फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, तो मेरे लिए तो और भी इंटरेस्टिंग था, और क्वेश्चंस भी I did not face a lot of difficulties while solving the questions. I was not 100% sure obviously, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है या जहां पे मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है just to understand the question or situation, right? And I'm pretty sure you all must have realized the same as well, right? आपको भी कोई difficulty या कुछ ऐसा नहीं आया होगा, right? Then coming on to the next passage. So next passage was about that criminal law something, right? जहाँ पे I would say criminal law and कुछ madness की बात कही गई थी, right? So the crux of the passage was कि if someone is different from you, so then you might have some other opinion for that person, but that person is not very easy to understand, right? तो उसको समझने के लिए जब आप समझने का उसको कोर्ट में ट्राई करते हो, देन यू हैव योर ओन बायसनेस, यू हैव योर ओन एनवायरमेंट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू जज दैट पर्सन. तो वहां पे कुछ स्पेशल टाइप के पीपल का भी मेंशन किया गया था, आई थिंक एलियन और समथिंग, राइट? तो उस पे एक पैसेज था. एंड देन व्हाट वाज द अदर पैसेज? नॉट एबल टू रिकॉल द फोर्थ वन. हाँ, so the fourth passage was solution to complex systems, जहाँ पे उसने टेल की बात की गई थी, राइट? So if you understand statistics, right, so there is a normal curve, and the events which are on the side of tail वो बहुत extreme events होते हैं, but यहाँ पे main crux of the passage was कि we will go to the DLR and the quants. Just give me फ्यू मिनट्स, राइट? तो वहां पे उसने क्या बोला था, वहां पे उसने स्पेसिफिकली यही बोला था कि अगर ऐसा होता है इन केस, राइट, कि वी ऑब्जर्व सम पैटर्न, वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस सिचुएशंस. अदरवाइज ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल, गुड एग्जांपल गिवन वाज बैंक रन. सो बैंक रन में क्या होता है कि इफ अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट फीलिंग नर्वस फॉर नो रीजन, राइट, दे विल गो टू द बैंक्स एंड दे विल स्टार्ट विदड्रॉइंग द कैश. तो वो एक प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ था जिसके बाद आपको समझ आ सकता है. एंड कोविड 19 का स्टॉक मार्केट में कैसे पहले स्टॉक मार्केट गिरा फिर ऊपर गया, तो वो सब भी मेंशन था. तो पैसेजेस, इफ आई टॉक अबाउट ऑल द फोर पैसेजेस, आई थिंक टॉपिक वाइज इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग रीड. फिलोसफी ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स, बायोलॉजी फिलोसफी ऐसे या पॉलिटिक्स से कुछ पैसेज नहीं आया. सो आई थिंक आई वुड से दीज पैसेजेस वर रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल, एंड क्वेश्चंस वर आल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. एटलीस्ट वो नेगेशन वाले, डबल नेगेशन वाले क्वेश्चंस नहीं थे, राइट? चूजिंग राइट ऑप्शन कुड बी द गेम चेंजर, राइट? यहाँ पे बस वही था कि एटलीस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर उसने मेन थीम ऑफ द पैसेज पूछा है, सो यू हैव टू बी वेरी कीन ऑन पॉइंटिंग आउट कि मेन थीम पैसेज का क्या है. यू कैन नॉट जस्ट पिन पॉइंट कि यार ये मेंशन है तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, राइट? सो मेन थीम एंड समथिंग विच इज जस्ट मेंशन इन द फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ इज वेरी वेरी डिफरेंट. फिर एक क्वेश्चन आई रिमेंबर जहां पे वो पूछ रहा था कन्फेशन का मतलब क्या है, राइट? सो वहां पे जेंडर, रेस, कन्फेशन, ऐसा 3-4 चीजें दी गई हुई थी. एंड इन द ऑप्शंस, कन्फेशन के लिए 4 ऑप्शंस थे. वन वाज religion, right? So I selected the religion. I don't know why, but I might be wrong here, right? I am not very sure कि उसका क्या सही या क्या गलत आंसर आना चाहिए था. करेक्ट. So and VA में भी, VA में I think it was a mix of para summary, para jumble,
odd one out, and para summary, para example, odd one out, and fill in the blanks, right? Fill in the blanks. So there were no new surprises. And odd one out, maybe para example, maybe I solved the questions, not very sure about the accuracy. Looks decent enough. Fill in the blanks was interesting one, and even para summary was decent, right? Para summary maybe कुछ इतना personally I did not feel कि बहुत ज़्यादा कुछ hard था, right? So let's go to the DILR part, right? Let's start with the DILR now. So DILR में we had 5 sets, 4, 4, 4, 5, 5. So I was not expecting these kind of sets in this exam, right? I was expecting a change in the difficulty level, but the kind of sets, the kind of situations that this exam threw to slot one candidates, I think that was not expected at all. A lot of students might have suffered from that as well, because if I tell you, बहुत ही new type की situations were there. So in every set, a new situation was there, and these new situation require you to think, right? तो बिना सोचे set को start करना. So it was not simple, I would say, metrics. It was not simple like that. Just calculation was not there, just missing values was not there. So it was a tricky section, right? And जब आप अंदर जाते हो तो आपके मन में होता है मैं इतने अटेम्प्ट करूंगा, इतने अटेम्प्ट करूंगा, बट इवन आई थिंक 7 to 10 questions should be a good attempt, right? It will help you get a decent percentile, not very bad percentile, to be honest, right? If you just solve 7 to 10 questions in this kind of paper, I think 10 net correct attempt is very, very good. So if you are scoring something around 30, then I think this is very, very good. Anything around, I think 18 plus would also be a good situation. So even if you're scoring 18 plus, you should not be worried about anything else, right? Because you could have compensated your score from the VARC and the quants, right? So VARC and quants में अगर आप खेल सकते हो, then I think 18 plus marks is a good thing in the DLR, in such kind of DLR. A lot of mentors or teachers are saying that DLR was doable, at least 2 sets or 3 sets were doable. Do not believe until and unless they themselves have sold 2 or 3 sets in the exam. If they have sold 3 sets, I have not found any mentor, influencer, student who have sold 3 sets. So you can see earlier a lot of people, including myself, I used to solve 4 sets, 5 sets, but this time every set requires decent amount of time. There were few or no sets which could have been solved in 10 to 12 minutes. So I took decent amount of time to even analyze or to start the set, right? तो first set से बात करते हैं. तो in my exam first set was chair वाला. So if you remember chair वाले में क्या था, there were I think 7 people, A B C D E F or something, I don't know, and कुछ condition दी हुई थी कि they are sitting in a circular arrangement, and at the start it was mentioned that D was in the second position, and then there will be vacant chairs for 2 people along with them, and then कुछ कुछ ये भी mention था कि after every turn, so there will be turn, right? After every round or turn, their seating arrangement will change. और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन था. So according to me, I did not solve this set. According to me, this was not easy. This was not doable. I think, but a lot of students or few students did this set. So I think this was hard plus doable. I can say that this was hard plus doable, right? So if some of you can just confirm the answer, अगर किसी ने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन, just confirm me what was the correct answer if you know. Anyone solve this set? Okay, so second set was based on the import export. So basically ये set में क्या था, so there were 2 diagrams. First is web diagram, जो I think पहले आया हुआ है एक बार, ऐसे circular diagram 2017 और 18 में आया हुआ है, and then there was a bar graph as well. For every country there was a bar graph, right? For every country there was a bar graph.
तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या था, सिंपली द क्वेश्चन मेड इट क्लियर कि यार अगर आप कहीं से इंपोर्ट करते हो तो यू विल हैव टू पे इंपोर्ट ड्यूटी, राइट। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट कि यूएस इंडिया पे कितना इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करता है, जापान पे कितना करता है। सो एवरी कंट्री विल चार्ज ए डिफरेंट इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एनी अदर कंट्री, राइट, डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशन। तो यहाँ पे वो सारे परसेंटेजेस मेंशन थे, और यहाँ पे सो दिस वाज इन परसेंटेज, दिस वाज इन एब्सोल्यूट वैल्यू, कि उन्होंने कितना इंपोर्ट ड्यूटी या जो भी है उन्होंने कलेक्ट किया। सो बेस्ड ऑन दिस देयर वर आई थिंक 4 क्वेश्चंस, राइट। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक आंसर फॉर फर्स्ट वन क्वेश्चन वाज 7, 3.5 का डबल कुछ करना था, ऐसा कुछ। राइट। So 7 was the answer to one of the questions. Then 7 के बाद, हाँ 7 was the answer. Then a lot of people are saying either 15 or 10 billion deficit will be there. I think 15 should be the correct one, but not sure here. Then वो पूछा था फ्रांस और जापान या यूके का कुछ कितनी कंट्रीज का सरप्लस या ऐसा कुछ हो सकता है। आई थिंक ओनली फ्रांस वाज द आंसर टू दैट, राइट। एंड then there was one question कि highest किसका है। So I'm not very sure. My option was B. I calculated that, but I'm not very sure कि वो B क्या था, कौन सी कंट्री थी, right? So I will leave that up to you to decide कि वो कौन सी highest वाली कंट्री थी। So highest वाला एक क्वेश्चन था। So these were 4 questions in that set. सेट वॉज प्रीटी डुएबल। आई थिंक अगर कोई बच्चा जा रहा है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे सेट को अच्छे से समझ लो। आफ्टर दैट आई थिंक यू कैन इंडिपेंडेंटली सॉल्व ऑल द 4 क्वेश्चंस, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, दैट्स फाइन। देन next set was based on the train route, right? So this was a little complex set. सो ट्रेन रूट में बेसिकली क्या बोला था ना, सो देर आर 5 स्टेशन A B C D and E, right? So there are 5 stations A B C D E, so you can book a ticket from A to E, right? So let's say if you are booking a ticket from A to E, technically the train system will book or will reserve your seat from A to B, B to C, C to D, D to E, right? So if you book a ticket from A to E, your seat will be reserved from A to B, B to C, C to D, D to E. And total seats given were 200. 200 were total seats. और कहीं ये बोला था कि 95% फिल रेट है। सो दैट मीन्स इन सम रूट, आई थिंक C to D वाले में, ये वाले रूट में 190 टोटल सीट्स रिजर्व्ड है। अब देखो C to D वाले रूट में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? जिसने A से E टिकट बुक कराई है, जिसने B से E टिकट बुक कराई है, जिसने C से E टिकट बुक कराई है, जिसने B से E टिकट बुक कराई है, जिसने B से D कराई है। So the point is you will have multiple values, right? You will have multiple values. उनका सम 190 था, and then there were other conditions की बाकी सारी जो values है A to B, B to C, D to E, उसकी values 190 से कम है। People just tell me क्या इस क्वेश्चन में ऐसा बोला था क्या कि इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 10 ऐसा कुछ बोला था क्या? जस्ट कंफर्म दैट, बिकॉज इफ दिस हैड बीन मेंशन्ड तो मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। जस्ट कंफर्म इफ दिस इज मेंशन्ड समवेयर। Slot 1 people, just tell me if you have seen something like this, integral multiple of 10. था क्या ऐसा कुछ? We will discuss quant answers as well. हाँ तो इफ यार तो आई थिंक आई मिस्ड ऑन दिस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10। अदरवाइज द पॉइंट इज कि उसमें एक क्वेश्चन था ना कि फिल रेट क्या होगा। सो 70, सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बट आना चाहिए था। तो आई थिंक टू क्वेश्चंस कुड हैव बीन इजीली सोल्व्ड, बट दैट्स व्हाट आई थिंक। बिकॉज एक में आपने देखा होगा 77%, 35%, और क्या था? So basically 77% is 154, 35% is 70 seats, right?
So if all the seats are integral multiple of 10, then how come 154 can be the answer, right? So if 77%, I think वो फिर हो ही नहीं सकता कभी भी. So I think वो अंडरस्टैंडिंग से इंटीग्रल मल्टीपल वाली से यू कुड हैव इजीली डी कोड. और फिर बोला था कि जो D2E वाला है इसका टोटल 7x होगा. सो इसका टोटल अगर 7x होगा तो then again there were very limited options, right? Either it could be 70 or 140, that's it. Because this 7x if this is a total of all these values which are multiple of 10, then 7x must be a multiple of 10. So the only options were 70 and 140. So तब तो ये सेट बहुत easy हो जाएगा. So I missed this fact completely. I could not decode that. बट अभी मुझे रियलाइज हुआ कि इफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 वाज मेंशन्ड तो शायद ये सबसे इजी सेट हो सकता है. मतलब आफ्टर द एग्जाम वी मे ऑल रियलाइज कि यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहे थे. सो इफ यू आर गोइंग फॉर स्लॉट 3, प्लीज टेक दिस इन माइंड कि ऐसा क्वेश्चन में भी कुछ दिख सकता है जो ऑप्शन में बहुत ही वेग ऑप्शन हो. सो आई नोटिस दिस कि काफी ऑप्शंस थोड़े थोड़े वेग थे, राइट? स्लॉट 1 पीपल, डू यू एग्री विद दिस? If this had been an integral multiple of 10, तो यहाँ पे और परसेंटेजेस याद है क्या दिया था? 77, 35. आई थिंक 11 के नहीं 7 के मल्टीपल में ही था बाकी परसेंटेज भी. सो बेसिकली उसने क्या पूछा था? 7x by 200 into 100. सो ये परसेंटेज पूछा था. सो बेसिकली 7x by 2 मस्ट बी योर आंसर फ्रॉम दिस, है ना? अब 70 भी था क्या? 70 एंड 80. सो लेट्स से 70% एंड 80%. सो अगर 70% होगा तो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर? 140, राइट? अगर 80 होगा तो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर? 160, राइट? ऐसा कुछ होगा. तो 77 तो आ ही नहीं सकता, दिस इज गोन. बट एक्चुअली आई मार्क दिस एज आंसर एज अ तुक्का, बट ये तो गलत है. 70, 140, 160 में से कुछ हो सकता है, राइट? अगर 84 मेंशन्ड है तो फिर और भी अच्छा है, राइट? तो वो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था. तो ये सेट वैसे डिफिकल्ट था. इफ यू वांट टू गेट ईच एंड एवरी आंसर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट बाय यूजिंग दिस फैक्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10, आई थिंक काफी कुछ किया जा सकता था. देन ये भी बोला था ना, ठीक है, वी विल डिस्कस इट लेटर, लेट्स से. बट कुछ ऐसा भी बोला था कि इसका 4/7, तो इसका 4/7 कितना होगा? 40 एंड 80. ओके, सो यहाँ पे भी कुछ मेंशन किया था कि इसका 4/7 इन दोनों का ऐसा सम वम होगा. तो वहां से भी आपको पता लगना चाहिए कि यार अब मेरे पास 2 ही वैल्यूज का खेल रह गया. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी ऑब्वियस क्रैक. मतलब एग्जाम में आ जाता तो आई कुड हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इन अ टाइम मैनर, मे बी इन अ 10-12 मिनट्स, बट नहीं क्लिक हुआ. एंड बहुत ही सिंपल कंडीशन थी, राइट? दैट वाज अ वेरी सिंपल कंडीशन. आई डोंट नो व्हाई आई इग्नोर दैट. या टैप्स वाला, आई थिंक टैप वाला वाज डूएबल as far as I can remember, but I did not attempt it. I did not even see that question. But a lot of students are saying this was doable. तो टैप वाले में बेसिकली क्या था ना कि there are 5 people, right? So they tap based on what they want to say, and then A, B, C, D and E, ऐसा कुछ था. यहाँ पे नहीं आ सकती वैल्यूज. टोटल वाज 40. तो अब देखो ए बी को टैप कितनी देगा, बी ए को टैप कितनी देगा, तो यहाँ पे सारा डेटा नोट डाउन करना था. दैट वाज द ओनली थिंग दैट यू हैड टू डू इन दिस सेट, नथिंग एल्स. सो इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट, बट आई थिंक देयर वर फ्यू कंडीशंस जो शायद बच्चा मिस कर सकता था. तो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस अबाउट दैट. अदरवाइज ठीक ही सेट था इसका. आई थिंक 9, 8 वेट सेकंड, 9, 7, 8, 8 एंड 8 ऐसा कुछ बन रहा था. और एक साइड पे 6, 6, 11, 8, 9 ऐसा कुछ बन रहा था. सो मतलब रो एंड कॉलम वाइज, राइट? सो आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली कि क्या क्या बन रहा था, बट इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट. जहां पे आपको बोला था ये बन रहा है तो ये कर दो, एंड यस बोल रहा है तो 1 क्लैप होगी. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ यू कुड हैव मैनेज दैट इफ यू
jump to that set. But I was not even able to go through that set because of the time restriction. ठीक है. एक का आंसर आई थिंक नॉट मोर देन 2 आ रहा था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. सो समवन टोल्ड मी दिस, एक का आंसर नॉट मोर देन 2 आ रहा. राइट. ओके. नेक्स्ट सेट वाज, कौन सा रह गया? सो देयर वर 3 ABC DEF. तो ये 6 लोग हैं, इनको 3 के ग्रुप्स में बांट दिया गया था. राइट. वन ग्रुप वाज एलीट ग्रुप एंड वन ग्रुप वाज नोविस और समथिंग. ठीक है. अब उसके बाद एवरी क्वार्टर यू आर रैंकिंग दीज ग्रुप्स. Was it 35 or 7? 35% I think must be the correct answer. तो Q1, Q2, Q3, Q4 में उनको रैंकिंग देते थे. So let's say this is group 1, which is elite group. This is non-elite. Right? And in every quarter 3 people will be there. इसमें 3 लोग होंगे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3. तो यहाँ पे you will give ranking 1, 2, 3, something like this. तो ऐसा कुछ था. And one people from this group will change the position, one people from this group will change the position, then same thing will happen in next quarter. This was an interesting set. I tried to solve this, but I was getting multiple cases, so not very sure if I got the correct answers to this one. But what I felt overall is that कि अगर कोई बच्चा 1.5 या 2 सेट करके आ रहा है तो यू आर एट अ वेरी वेरी गुड पोजिशन. बट 1.5 सेट अगर 100% एक्यूरेसी के साथ आप करके आ रहे हो, देन ऑल्सो I think you are at the safe end, right? But if you are expecting too much from this paper, I think this paper was something where every set deserves good amount of time. So भागा दौड़ी वाला कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं था, at least in the DLR. VARC में you can play with the speed, but DLR में I think understanding was required. So वैसा कुछ भी नहीं था जो हम लास्ट के 5-6 साल में देखते आ रहे हैं. And I met with a couple of good folks, so they have also said the same thing कि यार पेपर थोड़ा खतरनाक ही था, इतना कुछ नहीं था. इसमें बी के क्वार्टर 3 के बाद यार याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर टू बी वेरी ऑनेस्ट. Scale up depends on what type of difficulty slot to slot 3 guys will get. आई रियली विश कि यार उससे ज्यादा पेपर डिफिकल्ट नहीं आना चाहिए. अदरवाइज एटलीस्ट गुड स्टूडेंट्स हु हैव प्रैक्टिस फॉर लास्ट 10 months, तो उनका फालतू में कट जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए. राइट. सो पीपल जस्ट लाइक द वीडियो. नाउ लेट्स डिस्कस क्वांट्स. Let's aim for 20 likes. So quant में we will keep noting different kind of questions. You guys keep telling me, थोड़ा याद आ जाएगा मुझे कि what was the question and all that. उसके बाद let's see how we can proceed from that. चलो, है ना. Yeah, quants में I would say I think quant was manageable if you are decently prepared, right? तो 10 plus तो होने ही चाहिए, right? In the worst case I think you should try greater than equal to 8 questions, and 8 questions are pretty much doable. So even if you give 5 minutes to each and every question, and really I don't think even an average candidate will also need 5 or 6 minutes. Nobody will need 5 or 6 minutes. So quant was little straightforward. Do you all agree, slot 1 people who have taken the exam? So let's discuss questions one by one. So there was a question from mixture which includes acid and water. So I was getting something around 26 point. So exact answer must be 27 for this question. Right. So this must be the question, answer 27. Then there was a question on SICI. So SICI में क्या था ना, so आपको अमाउंट दे रखी थी at the end of 3 years,
and there was an amount at the end of 6 years. And this calculation was based on the simple interest. तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप जब जाओगे तो इसको आगे लेके जाने के लिए you have to add 3 times the interest rate, and interest rate is same in the SI. So you can say 3 times the interest rate for 1 year is equal to difference of these amounts. So वहां पे आपका इंटरेस्ट पर ईयर आ जाता. इंटरेस्ट पर ईयर को 3 times इससे माइनस करते यू कुड हैव गॉटन द इनिशियल सम. So I think interest was 1440 and initial sum was 9600 and rate of return was 15%. Right, rate of return was 15%. 3.5 year, not 3. Really? नहीं 3 और 6 था ना. अच्छा 3 and 6.5. हाँ whatever it is. So basically उससे डिवाइड किया था. So I was doing this in calculator. तो लेट्स से 6.5 तो 3.5 years का है ना, समथिंग समथिंग. तो ये करेक्ट है दीज वैल्यूज. उसके बाद बेसिकली पूछा था कि अगर 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा हाफ ईयरली तब क्या होगा, राइट. तो तब आपका यही होना चाहिए 9600 इंटू 1.075 की पावर 4 माइनस 9600. सो दिस इज योर इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन द कंपाउंडिंग पार्ट. सो इज दिस करेक्ट? ठीक है. सो इसका आंसर आई डोंट रिमेम्बर बट ऐसा कुछ बन रहा था इसमें. This should be the answer. Now I don't remember what was the exact part. 3221. Yes, yes, I think 3221. 3221. ठीक है, clear है. Guys, can you just tell me what your slot is or was? Slot 1 or slot 3? Slot 2 people are inside the exam hall. Yeah. Slot 3 था या slot 2 था? अभी मत जाओ ना, अभी क्यों जाना है? Slot 3 का entry will be there till 4. At least keep listening to this video. At least for the quant section, right? What were the other questions? एक boys और girls का था, if I remember. So basically, I think there were 2 questions of boys and girls. एक तो रेशियो वाला था. कुछ पहले ऐसा रेशियो है उसमें 21 गर्ल्स शिफ्ट हो जाती है, ऐसा कुछ 21 बॉयज शिफ्ट फ्रॉम हियर एंड देयर एंड ऑल दैट. तो वैसा क्वेश्चन था बॉयज एंड गर्ल्स वाला, है ना. एंड देन एक बॉयज एंड गर्ल वाला और भी क्वेश्चन था जहां पे आपको मिनिमम पूछा था. minimum initial students. minimum initial students. So I think answer to this question was 80. कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा इक्वेशन बनाओगे. Initial I took 10b boys, 10g girls. So I was getting the final solution as b is equal to z is equal to 4. So 40 plus 40, 80 must be the answer to this. So that was the thing. उसके बाद what else was there? इसका I think 99 was the answer. Just confirm. 99 था क्या इसका? I think one answer was 99, other was 80. One was 99, other was 80. Correct? ठीक है. Then there was a question on MP discount of 22%. Then I think profit कुछ बोला था 26% or something. So I think last में आपको कुछ पूछा था MP और SP और CP. CP दिया हुआ था. I think MP पूछा था. So answer to that is 175. Answer to that was a pretty straightforward question if you are good with how to decrease a number, how to increase a number. 100x से लेके करते MP तो हो जाता. Paper was, I think overall paper was on the doable side except the DLR part. DLR was pain, but if you remove the effects of DLR, then I think quant was on the easier end only. मतलब ऐसा quants आता नहीं है generally. Last के 2 साल से आ रहा है, that is a different thing. But generally you don't get this kind of quants.
So there was one very good question, log wala question, if you remember, 1/4 some n square minus 7 n plus 11 ऐसा कुछ था ना. I think yeah, this was the part greater than 0, right? This was the exact question. ठीक है, तो इसका आंसर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. सो ऑप्शंस थे इसके 0, 1, 2 एंड इनफाइनाइट, right? So a lot of students might have got this incorrect because of multiple reasons. या तो उन्होंने inequality का साइन चेंज नहीं किया, या फिर उन्होंने let's say डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, right? But the answer to this question is 0. 0 is the answer to this question. Right? How many of you got it correct? 0 is the answer. So basically इसमें क्या था ना कि this equation must be positive. So एक quadratic equation थी, this must be positive. So if this must be positive. And you know that if a quadratic equation is positive, then discriminant is less than 0. So यहाँ पे 49 minus 44 greater than 0 आना था, which is not possible. 49 is not less than 44. तो ये देख के आपको पता लग जाता था कि ये तो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, राइट? सो 0 मस्ट बी द आंसर टू दिस. 0 मस्ट बी द आंसर टू दिस, राइट? देन एक क्वेश्चन था अगेन, इट वाज डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ ऑड नंबर्स. आई थिंक एक सेट दिया हुआ था 1 से लेके 57 तक, और बोला था कि अगर इनमें से एक नंबर मैं पिक करता हूं, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नंबर्स और उसके राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर्स का सम इक्वल होगा. तो आई थिंक आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 41. दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू कैन ट्राई दिस. 41 से पहले वाले जितने और नंबर्स है उसका 400 सम आ रहा है, और बाद वाले का भी 400 आ रहा है, एंड टोटल सम वाज 841, बट 41 तो काउंट करेंगे नहीं, सो 800 इज अ टोटल सम. हाफ वैल्यू शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, हाफ वैल्यू शुड बी ऑन द राइट साइड. Interesting question. An interesting question, but not that difficult. Then there was one very simple question, जो equation based था, right? 6a minus 3b plus 3c something something. So there were two equations and there were three variables and two equations. So last में कुछ a b c का वैल्यू पूछा था. So a का तो यहाँ पे वैल्यू 8 आ रहा था डेफिनेटली. बी एंड सी के बीच में एक रिलेशन आ रहा था. सो आई थॉट इफ वी टेक एनी वैल्यू ऑफ बी एंड सी, इट मस्ट सेटिस्फाई बिकॉज देयर वाज यूनिक आंसर इन एवरी ऑप्शन. सो आई टुक C0, तो बी का वैल्यू कुछ मुझे मिला, है ना? एंड आई थिंक आंसर वाज 18 टू दिस क्वेश्चन. दिस 18 शुड बी द करेक्ट वन. नहीं, बी का वैल्यू वाज डिपेंडेंट ऑन सी, सो आई टुक सी का 0, बी का कुछ 1.5 या कुछ आ रहा था. सो बट चलता है. 11 is a very good attempt in the quants, given that you have at least 9 questions correct or something like that. Then there was a question on time and work, जहाँ पे आपको पे स्केल भी दिया था, बेसिकली पे पर डे दिया था, एंड उनका नंबर ऑफ डेज दिया था, सो यू कैन कैलकुलेट एफिशिएंसीज, और बोला था कि लेस देन इक्वल टू 10 डेज में काम खत्म करना है, एंड इन द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. So again, this was doable. I mean, you have to calculate कि अमाउंट पर यूनिट ऑफ वर्क किसका कम है. सो जिसका लोएस्ट है उसको तो पूरे 10 के 10 दिन काम करवाओ, और अगर उसने 10 दिन में काम एक बंदा मिलके नहीं कर पा रहा था, देन द रिमेनिंग वर्क मस्ट बी डन बाय द नेक्स्ट पर्सन, राइट? इसका आंसर आई डोंट रिमेम्बर. इसका टोटल खर्चा बताना था ना, तो 38 समथिंग था. आई रिमेम्बर 38,000 समथिंग समथिंग, right? Interesting. What other questions we had? Then there was a very simple question. जहाँ पे बोला था कि पहले तो सारे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रिमूव कर दो, 0 को भी रिमूव कर दो, एंड देन हमारे पास नंबर आई थिंक काफी लिमिटेड बचते थे, जिसमें से 4 प्राइम नंबर्स थे
और 2 नॉन प्राइम थे, और इनमें से 3 डिजिट नंबर बनाना था, एंड आई हैव टू टेक जस्ट वन प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना था, तो 268 वाज द ओनली चॉइस. सो 268 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने थे. टू 268 के नंबर ऑफ फैक्टर्स, आई थिंक 6 फैक्टर्स वर देयर. ये आ रहा था 67 into 2 का स्क्वायर, तो 6 फैक्टर्स वर देयर. नहीं, 126 नहीं आ सकता, बिकॉज 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ना. यू हैव टू रिमूव 1. हिमेंद्र, इसका 38,400 या 38,840, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शायद 38 कुछ ऐसा ही था. ठीक है. देन एक रोम्बस का क्वेश्चन था. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम स्लॉट 3? रोम्बस के डायगोनल का. So there are few properties of rhombus. First is area of rhombus is half d1 d2, and then 4a square, where a is the side, is equal to d1 square plus d2 square, and then difference of diagonal. This is, I think, a repeated question, past year में भी आया हुआ है. तो इसमें d1 plus d2 square की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो, -2 into d1 d2 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो. सो इसका 3600 आ रहा था. देन 3600 का रूट करोगे, बिकॉज दिस इज इन स्क्वायर, तो आई थिंक 60 मस्ट बी द आंसर. 60 मस्ट बी द आंसर फॉर दिस, राइट. देन एक क्वेश्चन था रिटर्न पे. इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि स्टॉक बॉन्ड और कुछ ऐसा ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट किया है. आई थिंक अगेन प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन था. इसका आई थिंक 900 वाज द return that you are getting from bond. Yeah, DLR I was not able to do at all. I don't know what happened. Maybe lack of practice. It's been 14-15 months since I have attempted the mock. I've attempted 1 or 2 sectional, but I think DLR is something which requires constant practice. So पूरा मेरा तुक्का बेस्ड ही था. But I can feel, I can relate with you what you have gone through as a student, because मेरे पे तो उतना pressure भी नहीं था. But a lot of stake is there for a lot of students for the DLR, right? What other questions we had? Guys, just like the stream, just like the stream if you are there. एक PNC का क्वेश्चन था. आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट वाज ऑन सबवे, कि you can select sauces, you can select breads, you can select other things. So I think उसका 600 should be the answer. 600 was the answer for that question, right? Let me know if I'm going wrong somewhere. मैंने कुछ TSD का भी क्वेश्चन था. थोड़ा सिंपल लग रहा था, बट आई डिड नॉट हैव टाइम. सो कुछ कुछ तो उसने बोला था कि 4 पार्ट्स में वो कवर करेगी डिस्टेंस. बट आई थिंक वी हैड सोल्ड दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन क्लासेस. आई कैन नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट वो TSD का कुछ कुछ तो उसने बोला था. सो दैट वाज द क्वेश्चन. what else we had? 600, I think 600 is correct. 600 should be the correct. SICI is done. वाटर एसिड हो गया, बोएंगल हो गया, CO2 हो गया. हाँ, then that there was one question, coordinate वाला यार I did not attempt. There was one very simple question कि x plus y should be less than 14 and x greater than y greater than equal to 3. So इसका कुछ 16 या कुछ ऐसा आंसर आ रहा था. 7 5 12 3 15 1 1. I think 16 or something. That was the answer to this question, right? This was also doable, but copy pen paper पे note ही करना था, and as soon as you note, you will see a pattern. That's it.
Not sure if 16 is the correct answer, but I think concept वही था. Guys, if you know the answers, just put it in the chat. Other question was minima maxima पे याद है. You have to find the minimum value of equation x square plus cx something, maximum of this. तो c की accepted value देखनी थी. तो I think c की accepted value 1/2 आ रही थी. 1/2 I think was the value coming out for the c. Do you agree? Guys, just like the stream. Let's target 25 likes. We will discuss next set of questions after that. DLR का I have already talked about. एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो. You will see the DLR analysis. What other questions we have? एक क्वेश्चन था कुछ 3 की पावर पे. So options were 57, 58, 59. उसमें पहले तो ये बन रहा था पैटर्न. Something like this. So this must be greater than 3 का पावर 21 प्लस 22. तो वैल्यू पूछी थी कि 57, 58, 59 उनमें से क्या हो सकता है. सो आई कुड नॉट क्रैक दिस क्वेश्चन. पता नहीं किसमें इसका सम कैसे निकलेगा, बट आई थिंक वी डोंट नो समेशन ऑफ n की पावर है. सो नॉट श्योर ये कैसा था. देन हाँ, एक वो था बी प्लस सी का कुछ स्टोक दे रखा था. 20 स्टोक्स दे है. तो उसमें बी का नंबर ऑफ स्टोक्स आ रहे थे 15. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. तो ये भी ठीक ही था. बॉन्ड गोल्ड वाले का आंसर वाज 900. यू कैन सी और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस दिस. तो 15 शेयर्स वर देयर. ठीक है. इसके बाद एक कुछ ऐसा क्वेश्चन था ना, याद है क्या? आई थिंक आई मार्क्ड इट रॉन्ग. इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट वाज दे वर नॉट आस्किंग कंप्लीट सॉल्यूशन वाज नॉट आस्क्ड. अ सबसेट वाज गिवन. मतलब सॉल्यूशन का छोटा सा पार्ट वाज गिवन. सो आई डोंट नो व्हाट आई डिड. आई मार्क द ऑप्शन जहां पे अगर रूट मेंशन है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा. आई डोंट नो व्हाट लॉजिक आई यूज्ड, बट आई फेल्ट इज कि अगर रूट मेंशन है तो वहां पे ओपन ब्रैकेट आना चाहिए. सो वैसा कुछ मैंने यहाँ पे किया. फाइन. विच ऑल अदर क्वेश्चंस वी हैड? यार बाकी कौन से थे मुझे याद नहीं आ रहा. हाँ, सो 2 क्वेश्चंस वर फ्रॉम ज्योमेट्री. वो मैंने किए नहीं. राइट, सो आई डिड नॉट डू दैट. रोम्बस का वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ आफ्टर दैट सैंडविच वाले का आई एम नॉट श्योर. आई मार्क्ड इट 600, बट क्या था? they have the person has to choose one sandwich or something, right? And two sources के लिए I did 62. Not sure if sources was a mandatory part or not. अगर वो mandatory नहीं है तो फिर 6C0, 6C1, 6C2 करना पड़ेगा. तो मे बी वहां पे मैं शायद गलत हो गया हूँगा. हाँ. सो अनदर क्वेश्चन वाज कि k की वैल्यूज कितनी है सो दैट रूट्स आर इंटीजर. प्रीटी बेसिक क्वेश्चन. व्हाट वाज द आंसर? k values root are integer.
यार आई डोंट नो, आई वाज गेटिंग 4 क्योंकि √25 माइनस के था ना, सो के 0, एक के 9 पे बनेगा, के 24 पे बनेगा। आई थिंक 6 शुड बी द आंसर, 6 शुड बी, सॉरी 4 शुड बी द आंसर फॉर दिस के वाला पार्ट। 6 कैसे आ रहा है? 0, 9, 24 एंड 16, 4 ही आ रही है। -4 के, ओ ओ ओ दिस वाज द केस क्या? अच्छा, B² - 4AC। ओ, तो 2 वैल्यूज आ रही है क्या? के 0 पे आएगी। अच्छा, तो 25, 21 नहीं है। देखो, एक तो 25 बन गया, फिर 21 नहीं है, 17 नहीं है, 13 नहीं है, 9 बन गया, 5 नहीं है, तो 1 बन गया। बट देन के 0 पे आ रही है, ये 4 पे आ रही है, एंड देन दिस इज कमिंग एट 6, तब तो 3 आंसर आ रहा है। हाँ, तो नॉन नेगेटिव 0, 4, 6 हो गया ना। के नॉट इक्वल टू 0 नहीं मेंशन था, नॉन नेगेटिव मेंशन था, सो 0 कैन बी देयर। So I think 3 should be the answer then. So maybe 3 or 2, I don't know. But ठीक है, 4 तो नहीं होगा। ठीक है। So 2 or 3। Okay. What else? What else was there? So let's see how many questions we have discussed. This is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So we have discussed all the questions. Log वाले का 0 है. So I think we have discussed all the 22 questions for quants. So I think I will score around how many marks? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 21, 24. Then I'm not very sure about this. Let's say, let's don't consider this. Then I'm not very sure about this. 4 or 6 mark किया था जल्दी जल्दी में. This is 27, this is 30, this is 30. Again, I don't think 600 will be the answer. इसका कुछ बता सकते हो क्या? सबवे का क्या था? 33, 36, 39, इसका भी गलत हो सकता है। ये भी गलत है, तो आई थिंक आई विल स्कोर 38, 40 मार्क्स, नॉट दैट ग्रेट, बट फाइन। ए प्लस बी प्लस सी कर तो दिया ना यार, ये वाला उसका 18 है। 18 इज द आंसर, ये रहा 8th नंबर। So is it visible? No, no, no. No. Okay, let me share a screenshot of this. So I have shared a screenshot in Telegram. 600 यार, उसमें बस ये बता दो, 600 उसमें जो सोर्सेज का बोला था, दैट यू हैव टू हैव 2 सोर्सेज आउट ऑफ 6 सोर्सेज, तो उसमें 2 लेनी मैंडेटरी थी, आप इग्नोर भी कर सकते थे सोर्स को। सैंडविच का 880 है क्या? इसी का जस्ट कंफर्म इफ, हाँ, इट्स अप टू 2 सोर्सेज। हाँ, अगर इफ अप टू 2 सोर्सेज है देन 880 विल बी द आंसर। वेयर इज अप टू 2 सोर्सेज? यस। सो यहाँ पे 880 विल बी द आंसर। ठीक है।
ठीक है। ओके, ग्रेट गाइस, ग्रेट मीटिंग यू ऑल। हाँ हाँ, तो फिर वही होगा 60 प्लस 61 प्लस 62 का मल्टीप्लाई। मैंने सिर्फ 62 ले लिया था। यू कैन इग्नोर द सोर्सेज, ठीक है, वो मैंने कंसिडर नहीं किया। आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड। बहुत ही जल्दी में था मैं। 120 इंटू 5 कर दिया था, ऐसा कुछ था। नहीं, 62 इज व्हाट, 15। आई डोंट नो हाउ आई डिड 600। 62 इज व्हाट, 15 ना। तो 40 आ रहा होगा, उसके बाद मैंने कुछ कर लिया था। ठीक है। ऑल राइट गाइस, गुड लक, बाय बाय, बेस्ट विशेस फॉर स्लॉट 3। चलो जी, ग्रेट।